So today's session is all about how you can become a full stack developer. I myself, my name is Kartik Tyagi, and I'm working with ImaginXP from last 3 years. And I did my research work in full stack, data science, AI/ML, and IoT. So today I'm going to teach you or tell you about like how you can set your career path in full stack development. We will be discussing a lot of different aspects of technology and like about your future aspects, like what after full stack development, what is exactly full stack development, what things we can say like these things are consist of full stack development. So on the this session will be regarding roadmap to become a full stack developer. On the right hand side, you can see a bulb and you can see that text, think twice, code once. That means, guys, it will be your, future journey will be regarding coding and programming languages, like around the programming languages and coding. So it is not like that you just write the code. First, you have to think. And what is code exactly? Code is nothing, just how we communicate to the computer to make to work done some task, or if you want to make any particular software for any operations, we just need to know the communication language to the computer. So that computer languages are coding. And again, आप exactly चाहते क्या हो, सोचते क्या हो, point by point computer को हमें समझाना पड़ता है, because machine is dumb. It is not like just like us human beings, like very smart, intelligent, IQ level. Computer is just whatever we give the command and then it will do the same. So coming on the next slide, what is full stack? What is full stack? Okay, so full stack is what, if we talk about multiple technologies, handling a single person is handling multiple technologies that we are going to discuss in depth in upcoming slides. That person is called as a full stack developer because there are multiple domains. बहुत सारे multiple domains होते हैं जिसमें एक developer काम करता है. There is just for example front end, back end, database. These kind of terminologies are there. But if you choose your option as a full stack developer, then the point is that you will be handling all of them. Every single language you will learn in this session, like in your degree program, every single thing you will learn in your degree program. Few of them you can see in the presentation slide: HTML, CSS, Node.js, MySQL, Angular, SQL, MongoDB. These are the computer languages and technologies which you will learn in your career to become a full stack developer. More in depth, why should one take up full stack as a career choice? Because full stack developers are versatile. Like by versatile, I mean that if you are a back-end developer, you can be a front-end developer as well. And also you can design an application plus DevOps में भी आप जा सकते हो. थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है और ऑपरेशनल होता है. तो आपको एक बड़ी पिक्चर में सबका आइडिया होता है कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हर एक स्ट्रीम का बंदा कैसे काम कर रहा है. So the time you grow yourself, you can be on the top level, on the management level, manager level, or on a CTO level, chief technical officer, like the kind of experience you will get in upcoming years. You can be on top of that particular industry. How? Because you know how it works in backend, front end, database, or DevOps, or design, or anything like that. These all things you will be learning in your degree program in next 3 years or 4 years. So full stack developer reduces operational cost. Obviously यार guys, जो हमारी operational cost है वो भी कम होती है. अगर एक company है, that company needs 4 engineers and that too in different aspects. So if it is my company, I would prefer I will pay one person doing that 4 tasks.
I'll not hire 4 different people to work on single product, and then they are communicating, and then there is not any kind of the operational cost will be that high because I have to pay 4 people at the same time. Rather than that, I'll pay 3 pay job to a single person. That is आपका जो increment है वो भी possibly high होते रहेगा. आपकी demand भी market में उतनी बढ़ती रहेगी. That is why the next point is startup prefer full stack developers over specialists. जितने भी आज के टाइम में नए स्टार्टअप्स हैं, whatever they are, like if we talk about small scale startups, so they don't hire generally so many developers. They just hire one developer, full stack developer, that's it. The full stack developer handles its whole product. They can develop any product, any kind of product, whether it is an e-commerce platform or just like Amazon, Flipkart, or Myntra, or anything like that, or maybe a blogging website or Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, social media applications, or grocery delivery applications, just like Blinkit or Zepto or Big Basket or anything like that. Initially, in their initial phases, the startup phases, there were companies who were preferring full stack developers only because they have pretty much good idea about every single domain. And then later on, they hire people under them to handle the work you have done. Understood? Guys, am I audible? Coming on the next slide, we have fourth and fifth point, that is database and cache. Sorry, just give me a second. These are the 3 points. Apart from that, everything you should know about full stack development, like what exactly is in the full stack development, like whatever the kind of technologies we have, kitne different domains hote hain, how many different domains we have in full stack development, which we need to know, from programming languages to development frameworks, third-party libraries, front-end technologies. There are multiple different domains which we will have to see now, because ultimately आप यही सब चीजें पढ़ के end up करने वाले हो. तो first is programming languages. कोई भी programming language, you can pick up one programming language in your degree program. Java, whether it is Java, C hash, Ruby, PHP, C++, you will be having a multiple programming languages in your degree program which you should be proficient in. जिस हिसाब से we will be teaching you guys, जिस हिसाब से we will be delivering the practical projects, like industry relevant projects जो industry में अभी चल रहे हैं, वही same projects आप थोड़ा बहुत सिखा के हम लोग आपको practical learning पे believe करते हैं, so that we need students to get trained, like skilled train, कि आज मैं अगर आपको hire कर रहा हूँ तो कल से आप काम करना start करो. If I'm paying you, that doesn't mean I don't want that कि I'll give you training. आज के time में companies are preferring those kind of students who are self-learned, who have skills. Mostly companies are not giving trainings nowadays, like those who are at Google level or Microsoft level. They don't give you trainings. They just hire you, and from next day onwards, you are onto the work. How? Because you have learned these skills during your degree program. Development frameworks and third-party libraries. There is a term called development frameworks and third-party libraries which help you to create your product. Like these are the, we can say, these are the small libraries, or we can say some kind of tool from which we can make our product more relevant, accessible, interactive for the user. That is Node.js, Express.js, Hibernate, Django, Python, Java, Spring, MyBTS, PHP, Think PHP, etc. There are multiple frameworks and libraries out there which you can surf and check it out. After that, we have front-end technologies. Front-end technologies, again, front-end hota kya hai? Front-end is basically the UI, user interface. We will be discussing this in upcoming slide. कि front end and back end में difference क्या है? What is the difference between front end and back end? What is the role of database out of there? So front end technology क्या है? That is the UI, user interface. Whatever we are seeing right now are created by full stack developers or front end engineers.
through HTML, CSS, JavaScript, or frameworks like jQuery, LESS, SASS, React, Angular. These kind of technology have been used to make this kind of UI, whatever you can see on your screen. The browser, the websites, or any software you use in your phone have been made by developers only. तो फ्रंट एंड में जो भी हमें दिखता है वो इन टेक्नोलॉजी से, इन लैंग्वेजेस से, इन टूल्स के थ्रू दिखता है. देन कम डेटाबेस एंड कैश. अगर आपके पास कहीं किसी सॉफ्टवेयर में डेटा है, दैट इज कहीं ना कहीं डेटा बेस भी होगा. या इफ यू टॉक अबाउट फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप लॉग इन कर रहे हो, योर क्रेडेंशियल्स have been saved in any kind of database. So how it works, there is a database जो आपका डेटा स्टोर कर रहा है. अब उस डेटाबेस को भी एक इंजीनियर ही मॉडिफाई करता है, एडिट करता है एंड आगे यूज करता है फॉर द बेटर इंटरैक्शन विद द यूजर. I'll give you an example. First is credentials, username and password. Again, जाके database पे ही store होते हैं. Next time you come, you enter your username, you enter your password. Then there are things which is going on in the database. कि UI से सर्वर में गया, सर्वर में आपका वो चेक हुआ, सर्वर एज इन की कंप्यूटर में इंटरनेट में गया एंड आपका यूजरनेम और पासवर्ड चेक हुआ. इफ इट इज राइट, then it will move you to the next segment, whatever you want. And if it is wrong, then there will be error 404. So that is how is technology is working. There is a database, there is a back end, there is front end. These all things are interrelated. As a full stack developer, you will be you will be having a good hand on every single thing, every single aspect of that particular application. Fifth point is basic design ability. When it comes to basic design utility, full stack developers to understand the basic principles and skill prototype design, UX and UI. UI is user interface, UX is user experience. For example, if you talk about Uber and Ola, guys, Uber and Ola का काम दोनों का same ही है. They work exactly same for the transportation system, for the if you need a cab or if you want to book a bike or anything like that. But their user interface is different. Their user experience is different. One more example we'll take, Zomato and Swiggy. Again, दोनों का काम सेम है, बट दोनों का जो यूआई है, कलर स्कीम है, फॉन्ट्स है, सारी चीजें अलग है. अल्टीमेटली एक फुल स्टैक डेवलपर ही उस पे काम कर रहा है, लाइक हाउ द एप्लीकेशन विल बी वर्किंग. So a very simple roadmap is what we can see here is, first, it is great if you go with any programming fundamentals. Second part, आपको एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बाद. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें तो यू कैन पिक एनी लैंग्वेज. लाइक इन योर अपकमिंग डिग्री प्रोग्राम, आपका ये जो सिलेबस है, जो फुल स्टैक का सिलेबस है, ये हमने ऐसे डिजाइन करा है कि आपको पहले हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, फिर हम आपको एल्गोरिथम्स बताएंगे कि एल्गोरिथम्स कैसे बनते हैं, कैसे स्टूडेंट्स कैन क्रिएट एल्गोरिथम्स, गुड एल्गोरिथम्स. देन यू गाइस विल बी वर्किंग ऑन फ्रंट एंड लैंग्वेजेस सिखाते हैं, फिर बैक एंड लैंग्वेजेस सिखाते हैं, एंड देन सीएसएन सिस्टम डिजाइन, कि एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसे चल रहा है. सो इन दीज 5 steps, in 3-year degree program, you learn these 5 steps, how, and ultimately at the end of your degree program, you are able to create high edge professional products, applications, website for startups or for MNCs or for yourself, that you can host on Google Play Store or maybe on anywhere on social media or anything like that. There are two kind of skills which we will differentiate here. One is आपका key soft skill for full stack developer, and then the other one is hard skill, key hard skill. दोनों में difference क्या है? Key soft skill for full stack developers are attention to detail, problem solving, creativity and communication. ये चीजें हम सिखाते हैं in the lectures, in the classes, and how we need it, why we need it. Attention to detail, developer को हर एक डिटेल
पता होनी चाहिए उसके प्रोडक्ट की, so that the developer can ensure the smooth and accurate functionality of that particular product. ऐसा नहीं होना चाहिए if you as a developer creating an application and don't know the loopholes, or we can talk about loopholes, or we can talk about any particular minute mistake जिसकी वजह से आपके क्लाइंट को या आपकी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. I'll give you an example. अगर जोमेटो की बात करें, how many of you have ever used Zomato? Mostly सबने किया ही होगा जोमेटो यूज गाइस. तो जोमेटो, अगर सोचो आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसका नाम है जोमेटो, एंड जोमेटो इतना फ्रीक्वेंट है ऑल ओवर इंडिया, एवरी सिंगल पर्सन इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, करेक्ट? अगर जोमेटो आपका 1 आवर के लिए बंद हो जाए, उसमें कोई बग आ जाए, क्यों? क्योंकि डेवलपर ने वहां पे हर एक डिटेल नहीं देखी एप्लीकेशन में उसे डिप्लॉय करने से पहले, तो कंपनी का कितना लॉस होगा, प्लस रेस्टोरेंट ओनर का कितना लॉस होगा. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस की सॉफ्ट स्किल, विच इज अटेंशन टू डिटेल. हर एक डिटेल ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अप्लाई करते हैं डेवलपर्स. देन यू शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. You should know how to solve a problem in multiple aspects, क्योंकि ultimately goal developer का यही है, that how to solve problems mostly through computers and through softwares. But softwares बनाने के लिए you will be needing some computer languages, that comes in right hand hard skills. Third point is creativity. Full stack developers जो होते हैं, they have this aesthetic, they are aesthetics with logic, क्रिएटिविटी, जहाँ पे डिजाइन आ गया या फिर विजुअली अपीलिंग डिजाइन आ गए, कि जो चीजें दिखने में सुंदर है. कोई ऐप बनाई आपने और वो दिखने में इतनी अपीलिंग होनी चाहिए दैट हर एक यूजर को, एमएनसी को, प्रोडक्ट्स को, सबको पसंद आनी चाहिए. देन communication is important to become a full stack developer. Again, if you will be working in any MNC, huge MNC just like Microsoft, Google, HCL, IBM, Wipro, or anything like that, then there should be good communication along with your team member or your superiors, so that you can solve technical issues faster and create a comfortable work environment. Coming on the next point, we have hard skills also. Hard skills क्या होते हैं? ऐसा नहीं है कि ये easy और ये hard है, या फिर ये easy है ये hard है, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब easy है if you are consistent with yourself. Again, if you're consistent, then every single point here you can see you will be able to improve your skills in that particular domain. हार्ड स्किल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है. सबसे पहली चीज, आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाने वाले हैं. सेकंड, प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, जैसे कि फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेजेस. अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फ्रंट एंड व्हाट आर बैक एंड लैंग्वेजेस. फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जस्ट लाइक HTML, CSS or JavaScript. Backend is JavaScript, Python, C++. I will explain you how it is different. So any programming language, you should know maximum programming languages if you are preparing for, like, if you want to be a full stack developer. फिर डिजाइन की बात करें, along with functioning properly, website should look good. अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है या आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, स्मूथ है, it should work good. It should look good for the user. हमें अच्छी दिखनी भी चाहिए. Then analytical skills are important. Developers के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, along with product, user, clients. Every information is carried out with developers only. तो जो developers के पास information है अपनी, that particular information he have to analyze to make the product more efficient and fast. एक प्रोडक्ट, वेबसाइट, एप्लीकेशन तभी अच्छा है अगर वो फास्ट है, उसमें बग्स नहीं है और कम से कम स्पेस लेता है. दैट डेवलपर इज द बेस्ट डेवलपर अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है.
These are the some key skills. You can see full stack web developer need, that is back end, front end, agile design, database, DevOps, ACO. उसमें internally you can identify HTML5, CSS3, JavaScript, Angular, TDD, Scrum, developer tools, Git, SAS. These are frameworks, languages, different technologies which you will learn in your journey of becoming a full stack developer. ऐसे different different subjects होते हैं कॉलेज में हर एक सेमेस्टर में जो आपको पढ़ने होंगे. दैट टू ऐसे अलाइंड होते हैं कि दैट इज इजी टू हार्ड. नॉट लाइक आप एकदम से देखोगे एंड आप लोग कहोगे ओ माय गॉड व्हाट इज दिस. देयर वी कैन सी Linux. It is very difficult to understand Linux. But when you will enter the college and you start studying about these particular terms and terminologies, जब आप practical hands-on experience लोगे, you will be like you will feel very good when you run your code and the program get execute कि आपका computer आपके लिए काम कर रहा है. Whatever you write, whatever the software you want to make, you can create software. You just type, you make, and then you can see. Users can see. Then it will all become easy. You'll start from easy to hard. Not like mid to hard or hard to hard. It will from easy to hard, 0 to 10 के लेवल पे होते हैं. अच्छे से रोड मैप बनाते हैं, करिकुलम्स जो होते हैं बहुत शॉर्टली बनाते हैं फॉर द स्टूडेंट सो दैट इट इज इजी टू ग्रास्प एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ वेबसाइट्स. वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक. थोड़ी थोड़ी मैं आपको वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बताऊंगा कितने टाइप की होती है और कितने टाइप की लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं. स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं जो आप अपने आगे करियर में सीखोगे, देखोगे. स्टैटिक आप लेफ्ट साइड देख सकते हो, डायनेमिक आप राइट साइड देख सकते हो. स्टैटिक को हम क्लाइंट साइड बोलते हैं. क्लाइंट साइड वेबसाइट जिसमें खाली एक यूजर इंटरफेस होता है, उसमें सिर्फ एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होती है. सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन सेम दिखती है. इट इज प्रीटी मच सेम फॉर एवरी सिंगल यूजर. बट इफ यू टॉक अबाउट डायनेमिक वेबसाइट्स, इट इज पर्सनलाइज्ड. Right hand side, if you can see server side along with the UI, that is right side में आप देखोगे database is there, server side programming languages is there, PHP, MySQL if you can see. But left hand side there is only UI, Bootstrap, CSS, HTML, JavaScript, jQuery, React and Angular, JS. Dynamic websites जो होती हैं वो full stack developer create because it consists of server side and the user interface. I'll tell you the example. Wikipedia is static, but Amazon is dynamic. How? Because Wikipedia पे जो information, how creativity, I'll answer all the things at the last of the session. So the session will go smooth. Okay, if you have doubts related to that particular doubt, a particular slide. Coming back on the point, Wikipedia and Amazon. Wikipedia, guys, सबके लिए same है. Every single information on the page is same for everybody. But if you talk about Amazon, Amazon पे it is personalized. How? आप login करते हो, आपको जो particular products होते हैं वो recommend करता है. हो सकता है आपने Amazon login किया, मैंने किया, मेरे को अलग products recommend होंगे, आपको अलग products recommend होंगे. Again, login करना is next level deal. How? UI is same. Wherever you see login, you say it as a dynamic website. How? Because there is involvement of server side. Again, database. How? Username or password you put, it goes into the database. Again, database scans if there is this username and password exactly same, then it returns it to the UI, to the user. यूजर देखते हैं यूजर इंटरफेस पे कि हाँ यूजर नेम पासवर्ड मैंने सही डाला है एंड आई हैव लॉग्ड इन. बट अगर कहीं गलत डाला है तो क्या होता है, एरर आ जाता है. तो इसमें काफी सारी चीजें बैकएंड और फ्रंट एंड की होती है. बैकएंड मतलब जहाँ पे भी सर्वर साइड है, जहाँ पे भी सर्वर साइड इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज बैकएंड. सर्वर क्या होते हैं, सुपर ह्यूज कंप्यूटर्स, मतलब इंटरनेट पे होते हैं.
विकिपीडिया इज स्टैटिक इंफॉर्मेशन, सबके लिए हर जगह आपको सेम ही मिलेगी. इट विल बी सेम फॉर एवरीवन. Coming on the next point, types of application. There are different kind of applications you use into day-to-day life. That is native application. Native application क्या होती है? Native application वो होती है जिनका कोड बेस अलग अलग होता है. Like अगर मैं एंड्रॉइड के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज अलग होगी. एप्पल के लिए बना रहा हूँ तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी. एप्पल के लिए we use Swift. The logo on the front end, the logo on the first side in the left, you can see that is Swift. Swift is the language. If you talk about Android, there is Kotlin and Java. ये दो लैंग्वेजेस होती हैं जो नेटिव लैंग्वेजेस होती है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है. देन वी टॉक अबाउट हाइब्रिड एप्लीकेशंस. हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती है? व्हेन सिंगल कोड बेस एक ही लैंग्वेज लिखते हैं और सारे प्लेटफॉर्म पे वो एप्लीकेशन रन होती है. दैट इज फ्लटर, रिएक्ट and www, मतलब websites. You can access websites through iOS, through Android, or through hybrid, or you can access any application made by Flutter or React on any platform. These all languages and frameworks you're going to learn in your sessions, upcoming sessions in your degree program. Like आप full stack developer बनोगे तो उससे पहले आपको ये एक एक languages सिखाई जाएंगी कि ये सारी चीजें कैसे बनती हैं and कैसे काम करते हैं इन सारी चीजों को. Some responsibilities of full stack developers, that is maintaining code applications. जितनी भी applications होती है सबका code maintain करना पड़ता है. Manage web development, आपकी जितनी भी code का web होता है वो भी आपको manage करना पड़ेगा. Working on animation, graphic design, ये सारी चीजों का जो code होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा. Building and regularly managing the database, again एक database भी होगा उसको भी आपको ही देखना होगा as a full stack developer. इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन टेक, और यू कैन टुक एवरी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर योर स्किल्स. अगर आपको सब आता है, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फुल स्टैक डेवलपर पूरी कर सकते हो फॉर द कंपनी. Like how is our approach, like how what we do in the program? We shared recorded sessions, live sessions, industry expert sessions very frequently to the students. रिसर्च बेस्ड लर्निंग होती है गाइस. उसमें क्या होता है कि दैट व्हाटएवर द करंट ट्रेंड्स आर, टेक्नोलॉजीज आर, टूल्स आर, रिसर्च में जो चल रहा है वही चीजें हम आगे स्टूडेंट्स को पास ऑन करते हैं. इंडस्ट्री एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जितने भी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सिमिलर टू दैट, हम स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं कि आप भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनाओ एंड आप भी ऐसा ही बनाओ. Like in future, if you are pursuing BCA full stack or BTech full stack, or you want to be a full stack developer, you focus on the research based learning and then project based learning कि आप हर महीने हर वीक एक छोटा सा छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, minute project, so that one day your project will be from here to here. Like initially if you go to gym, अगर आप में से कोई एक्सरसाइज करता है तो हम स्टार्ट हमेशा कम केजी के डंबल से ही करते हैं. लेटर ऑन वी कम टू दी हेवी डंबल्स और हेवी वेट मशीन्स. सिमिलरली हम छोटे प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं टू दी हेवी प्रोजेक्ट्स. बट अगेन दोनों जगह हमें कंसिस्टेंसी चाहिए फॉर द फिटनेस एंड फॉर द मेंटल फिटनेस टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर. Positions as a full stack developer, like job profiles, if we talk about, we have in market right now web developer, API engineer, full stack software engineer, junior full stack engineer, software development engineer. There are multiple job roles. जॉब रोल्स का नाम चेंज हो जाता है एज पर योर स्किल सेट, बट आप फुल स्टैक डेवलपर ही होते हो एट द. जो कंपनीज आज के टाइम में हायर कर रही हैं, द कंपनीज लाइक टॉप कंपनीज दैट आर हायरिंग फुल स्टैक इंजीनियर्स आर Oracle, टेक महिंद्रा, IBM, Amazon, Cognizant, Accenture, TCS, HCL, Delivery, and 2,352 companies is hiring full stack developers currently, like right now. And this information is on the Glassdoor. If you will go to the Glassdoor, this is the source is the Glassdoor. If you will go to the Glassdoor and search the same thing, you can see the same thing.
They're the topmost companies who hire full stack developers. And apart from that, there are many companies, including startups, which need full stack developers right now in the market. Ambition box पे अगर आप जाके salaries देखोगे full stack developers की, that is TCS is giving around 4,50,000 per annum. On the other hand, Tabzo is giving 12,11,000 per annum. IBM 6,50,000. Visar Labs 7,85,000. Nuclei 10 lakh. Report Garden 8 lakh. Accenture 5,30,000. These are the companies you will plan like in future. And other than that, अगर आप देखोगे तो 2.5 lakh होती है lowest salary which a full stack developer get, but जो average है that is 6.5 lakh, and highest जो जाता है that is 20 lakh. 22 lakh पर annum तक आपका पैकेज जाता है फुल स्टैक डेवलपर का. ये किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि आप कितने अपने स्किल्स इंक्रीज करते हो. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप कितनी ज्यादा करते हो, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने पोर्टफोलियो में लगाते हो. अलॉन्ग विद दैट आप अपनी सीजीपीए कितनी अच्छी मेंटेन करते हो. देखो सीजीपीए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कि marks is also important. Whenever you give exams, you have been primarily check that this student got 80% or this student got 70% in exams, like in the university exams. Apart from that, your skill matters most. Your project matters most. कि किसके कितने अच्छे projects है, कितने complicated projects है, कितनी multiple technologies, multiple tech stack का आपने use किया हो particular software को बनाने के लिए. Initially, the salary start from the barrier of 6.5 lakh, and you can see 5 to 9 years, 10 years, it goes till 10 lakh, 20 lakh per annum. Like with along with your experience in some particular company, जब आप college के बाद एक company join करोगे, आप software लिखना start करोगे, like you start writing code or you start your career as a full stack developer. Initially, your salary will be this, then that. Then again, in within 5-9 years, it will be in the bracket of 10 to 20 lakh per annum for sure. Full stack developers की जो salaries guys in different continents is US में you can see Australia, India, Germany, UK and Canada. So if there is a company in India, for example Google or Amazon, and you're a full stack developer there, and that company wants you to travel to different countries, आपका जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. कि अगर आपने यहाँ पे Amazon ज्वाइन किया, Amazon wants you to move to Germany because they need a full stack developer at the work location, so they will call you from here to there. They will see everything and then they will provide you that much amount of money in conversion. So that's a very good part. That's a very good part about in this kind of job role कि यार आप फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे भी हो, अभी आपका ऑनलाइन काम है, कल को आपको वो कंपनी बाहर बुला रही है, तो आपका जो पे स्केल है वो ऑटोमेटिकली 10x या 20x हो जाता है. ऐसा नहीं यहाँ जितनी सैलरी मिल रही है वहां पे भी उतनी मिलेगी. तो दिस वाज द सेशन which we have covered what is full stack में कितनी लैंग्वेजेस आप काम कर सकते हो, क्या रोड मैप रहता है, salary structures क्या होते हैं, कितनी opportunities right now in the market, what kind of domains you can get after full stack development. Now we will start Q&A. It's 5:45 and we have 15 minutes for Q&A. If anybody have any question, can ask. Okay, we have two questions here. Can AI replace the job role of a full stack developer? See again, AI, Saurav Verma and Darshan Pawar. I will explain you one thing in a very simple language. आपको एक चीज समझाता हूँ. AI जो चीज है ना, AI क्या है? AI is human made. And AI काम कैसे करता है? AI जो already data है उस पे काम करता है. Humans की तरह
AI is not creative. AI is not original. If we talk about any kind of music or art or design, do you think AI generate कर लेगा? नहीं. जो human tendency है originality की, that is only possible through humans. तो AI full stack developer की जॉब नहीं ले सकता ऐसे, क्योंकि because there will be not any kind of originality. जैसे जैसे innovate हो रहा है environment, वैसे वैसे humans are also becoming more smart, just like computer. Possibility नहीं है, possibility है, there are possibility, but still AI is not original. AI is not having that kind of originality of human in music, art, programming, writing a code. Again, AI और human का interaction में भी अभी still research is going on, because अगर हम AI को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, कभी कभी AI कुछ और समझता है. जो AI और ह्यूमन का कम्युनिकेशन है, वहां पे भी अभी देर इज अ लॉट ऑफ मिलियन किलोमीटर ऑफ गैप. उस गैप को भी अभी फुल स्टैक डेवलपर्स ही हटा रहे हैं. सर, आई लर्न पाइथन एंड माई एसक्यूएल इन स्कूल, सो कैन यू सजेस्ट मी एनी प्रोजेक्ट आइडिया? Python and MySQL, yeah, sure. Dharuv, you can work on library system, library management system, or anything like that. Like if you are new to Python and SQL, and you can go with LMS, library management system, or maybe attendance system, or like which takes information from the students if they are present or not. And again, it is you are storing that particular data in the database. Or you can create a simple game of Sudoku कि जैसे जैसे आप क्लिक करवा रहे हो वहां डेटाबेस में 100 सेव होते जा रहा है. एंड अगर वैसा होगा तो पाइथन के थ्रू यू कैन पुट सम एल्गोरिथम्स की लाइन में अगर वो पर्टिकुलर सेम पैटर्न दिखता है, देन अ कंप्यूटर विल और द ह्यूमन विल